नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज किसी ने मेरे से सवाल किया और जो अपना आप में बड़ा गंभीर सवाल था साथियों। और he asked me that my brother was arrested today under a false Pocso case and the police did not provide exact details and refused to give us a copy of the FIR or disclose the exact allegations. First, we need to secure his bail and then prove his innocence. The information we have so far is my brother is a store manager, is one of the very high profile store in NCR, and a customer visited the store on so and so date along with a daughter which is 7 to 8 years old. The father asked my brother to look after the child while he shopped. At one point, the girl kicked a football towards the trial room area and my brother went to pick it up. The girl followed him to that area which was out of CCTV range for barely a second. 5 days later, on so and so date, the parents filed a Pocso case against my brother, alleging that he exposed his private parts to the child during that 1 second, and the police are not providing us with the FIR copy. Now, what should we do? Sathiyo, this is something, a very important case which we must understand. That Pocso cases are serious in nature, very serious in nature. And I told that family that I'm sorry that you and your family are facing this situation. A false Pocso case can be extremely traumatic, but there are clear legal remedies and safeguards you can use right away. And let me break this down step by step. You can act immediately and strategically. तो साथियों, ये मैंने उनको जवाब दिया और मैंने उनको बोला कि now first of all you get the FIR copy and you have a right to get the FIR. And this is the duty of the police to give you the FIR, and there are several judgments are there. As per section 207 CrPC, the accused is entitled to receive a copy of FIR and other relevant documents. If police refuse, I'm not talking about all the law, but specifically in Pocso cases, sometimes police don't give you the FIR copy. So in that case, you can either take out that copy from their authorized website, or you can request the that concerned police station to give you the FIR copy, or through RTI you can get the copy, or there are different ways. First of all, that you should not get scared. And if you know that your brother has been implicated falsely in this case, then definitely it is a false case. The only thing that we have to prove in the court, and of course, if it is a trial room and the person who is changing his clothes, and all of a sudden one ball comes here, if the kid is playing and all of a sudden that kid goes to that area and open the door, by mistake, I don't think it comes into the actual Pocso case. But I don't know. Prima facie, I don't know. I'm talking about what that person has spoken to me, and if I'm taking that view in my consideration. And if he or she said it is a false Pocso case, then it could be a false case, and it all depends on the police, what evidence the police is going to get it. And it's a prima facie case, and
the police has to decide on the basis of evidence whether it's a false case or it is a purely a Pocso case. But साथियों, I have noticed, that कुछ आपसी रंजिश के कारण कई बार फॉल्स केसेस जो होते हैं वो गढ़ दिए जाते हैं, मर दिए जाते हैं, जो अपने आप में बहुत गंभीर होते हैं। और मैंने अपने हमेशा वीडियो के माध्यम से कहा है कि फॉल्स केस फॉल्स ही होते हैं, उनको ओरिजिनल पॉक्सो केस नहीं बनाया जा सकता। द ओनली थिंग कि मैं समझता हूँ उसमें पीड़ा कितनी है कि आपको अननेसेसरी उस केस में लपेटा जा रहा है या लपेट दिया गया है, आपके खिलाफ एक फॉल्स एफआईआर बन चुकी है साथियों। बट मैं हमेशा ये कहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, और अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर बनी है तो मैं बड़े दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं साथियों, मैं कोई हवाई बात नहीं करता हूं और ना मैं कोई धाराओं की बात कर रहा हूं, मैं एक जनरल टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा हूं कि अगर आपके खिलाफ पॉक्सो केस बन गया, मान लेते बन गया है, तो एक अच्छे अधिवक्ता से, एक अच्छे एडवोकेट से बात करें और जो सर्कमस्टेंसेस हैं, समय, वक्त, जगह, एविडेंस क्या है, किसने देखा क्या, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच टू बी कंसीडर्ड। और उसको व्हेन यू गोइंग टू टॉक टू योर एडवोकेट, ही डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, एंड द ओनली थिंग दैट यू हैव टू सी a nice advocate, the learned advocate who can definitely go through the whole the incident, because in that case if the false case is there, so what charge sheet says, that is also what is there in the charge sheet, what is there in the medical examination, what is there in the FIR, what is the evidence, who is the witnesses, what is the time limit, what is the location, ये सारी चीजें मैटर करती है साथियों। और क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक पॉक्सो के ऊपर रिसर्च करते हैं, रेप, दहेज हत्या, बहुत सारी चीजों पर हम रिसर्च करते हैं, हमारी टीम रिसर्च करती है पूरे इंडिया के अंदर, और हम लोग कोशिश करते हैं कि झूठे केस में अगर लोग फंसते हैं तो कैसे उनकी मदद की जाए। और अन्याय के खिलाफ मैंने हमेशा कहा कि आवाज उठाइए, अपने डरने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ी दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि माननीय जजेस होते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, माननीय जजेस काफी लर्निड होते हैं। अब डिपेंड करता है, इनकेस अगर कन्विक्शन भी हो जाती है और कोई गलत कन्विक्शन हो रही है, गलत सजा काटे तो शर्म तो आती है बस, लेकिन उससे कैसे बचा जाए ये एक तरीका है इसका, कब बेल अप्लाई करनी, कब बेल अप्लाई नहीं करनी है, और इमीडिएट आपकी बेल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एविडेंस इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली यू हैव टू वर्क ऑन योर एविडेंस व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और यू हैव टू सीक अ लीगल डिफेंसेस इन पॉक्सो फॉल्स केसेस, और दीज आर द केसेस व्हिच इज हाईली कंडेमेबल। हम ऐसे केसेस को हम बुरी तरह से कंडेम भी करते हैं साथियों, बट मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अपने वकीलों पर विश्वास रखें, ये अपना आप में बहुत जरूरी है, और अपने बचाव में ध्यान रखें। अगर फॉल्स केस बना है तो मैं समझ सकता हूँ कि घबराते हैं लोग, परेशान हो जाते, बट नथिंग टू डू दैट बॉस। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर एविडेंस, द सर्कमस्टेंसेस, द विटनेसेस, द डिफेंस विटनेसेस। आने लीजिए चार्जशीट को, लेट्स सी कि चार्जशीट में क्या है, लड़की के 164 के बयान में क्या कह रही है, 160 में क्या कह रही है, किसके दबाव में बयान दिए गए हैं। बहुत सारे केसेस हमने करे साथियों, कन्विक्शन हटी है। चंडीगढ़ में हमने एक कन्विक्शन हटवाई है, बिलासपुर में हटवाई है, कोलकाता में हटवाई है, बहुत सारे करते रहते हैं हमारी टीम, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप झूठे केस में फंसे हैं तो आपको न्याय जरूर मिलेगा, ये बड़े दावे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ करो। जय